Hello, good evening, everybody. Thank you very much for logging in, especially on this rainy day and with forecast of depression and heavier rains. Thank you for joining. So, today's Facebook Live session is on pregnancy, and if any queries you people have regarding pregnancy related questions. We have already received some questions beforehand, and I would like to start by answering those. And then, if along the way some more questions come in, I will try to answer those. तो प्रथम क्वेश्चन थिला जोटा आमे पाइथिलु आगुरु फर्स्ट प्रेगनेंसी रे जदि किछि एबनॉर्मल छुआ हुए ताहले सेकेंड बेबी मध्य सेमती हबो कि एटा निर्भर करे कि प्रथम प्रेगनेंसी रे कौन एबनॉर्मलिटी थिला बहुत गुड़ा एबनॉर्मलिटी छुआ रे थाए जोटा गोटे रैंडम इवेंट आउ सेटा आउथरे रिपीट करिवार संभावनाटा बहुत कम थाए ताकू रैंडम म्यूटेशनल किंबा रैंडम मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स कहती केतुरे डिफेक्ट थाए जोटा जेनेटिकली कैरिड थाए आउ सेमतिया केस रे सेटा बारंबार हबार संभावना थाए तेणु आमर एडवाइस हबो जदि गोटे प्रथम गर्भ रे छुआ डिफेक्टिव थिला ताहले आउ गोटे प्रेगनेंसी प्लानिंग करिया पूर्वरु दीटा इंपोर्टेंट काम करिवे प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आपन को गायनोकोलॉजिस्ट हु करिवे आउ सेकेंड गोटे जेनेटिक काउंसलिंग मध्य करिवे जेनेटिसिस्ट माने होंती जो माने स्पेशल ए जेनेटिक्स उपरे तांकर स्पेशलिटी थाए आउ से माने सेही विषय रे भलो एडवाइस दे पारिबे कि फर्दर ए टाइप रो एबनॉर्मलिटी हबार कौन संभावना अछि तृतीय सबुठु इंपोर्टेंट एडवाइस मु कपल्स मान को देबी कि जदि गोटे छुआ रे एबनॉर्मलिटी अछि तार पेपर्स तार प्रॉपर डिस्चार्ज शीट्स तार जो डॉक्टर डायग्नोसिस करथिबे कि अल्ट्रासाउंड हो कि देखिला परे डॉक्टर डायग्नोसिस करथिबे सेही पेपर गुड़ा को बहुत इंपोर्टेंट आउ सेकेंड प्रेगनेंसी पई काउंसलिंग करला बेल को आसला बेल को सेही गुड़ा को निहाती नेकिना आसीथिबे ताहले ही आमे बेसी भलरे प्रथम प्रेगनेंसी रो एबनॉर्मलिटीज बुझी परिबा आउ कोनसी वे रे ता उपरे हमरो थॉट्स दे परिबा second question was that I am trying for pregnancy for 4 months but I do not have any results and I am getting regular periods. I think a question टा pregnancy related तो नुहे but pregnancy हवा पाई चेष्टा करा जाउची तो आम लैंग्वेज रे आमे कहू कि गोटे वर्ष मिनिमम चेष्टा करिवे प्राय कपल्स मान को पाई समस्त पाई नुहे प्राय कपल्स मान को पाई जो माने यंग और फर्टाइल से माने वर्षे खंडे चेष्टा कला परे जदि गर्भ न रहे ताहले ही से माने गोटे डॉक्टर को विजिट करवा कथा नहले अननेसेसरली अधिका टेस्ट अधिका ट्रीटमेंट अधिका मेडिकेशन हबार संभावना रहे तेणु वर्षे खंडे अनप्रोटेक्टेड परे जदि न रहिला प्रेगनेंसी ताहले ही डॉक्टर पाखु जिबे तापर प्रश्न थिला एसिडिटी और गैस प्रेगनेंसी रे होची थ्रू आउट एटा नॉर्मल की निश्चित प्रेगनेंसीटा गोटे एमतिया स्टेट जो बहुत प्रोजेस्टेरोन बोली गोटे टाइप रो हार्मोन बाहर आउ से हार्मोनटा सब मसल्स गुड़ाक रिलैक्स करे बॉडी रे तेणु इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रो मसल मध्य रिलैक्स कर दिए से कि ब्लोटिंग इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन एसिड इरिटेशन ये सब हबार संभावना प्रेगनेंट इनफैक्ट प्रेगनेंसी रे एगुड़ाक बहुत कॉमन बोली भावा जाए किंतु बहुत परिमाण रे ताकू कंट्रोल रे करी हबो जदि प्रेगनेंट स्त्री लोक तार डाएटटा ठीक टाइप रो डाएट ठीक परिमाण रो डाएट ठीक समय रे एगुड़ाक रखिए ता छड़ा केते गुड़ाए ओवर द काउंटर मेडिकेशन अच्छी जेमती कि लिक्विड एंटासिड है गैस एक्सपेल करने गैस एक्सपेल का है एगुड़ाक सब व्यवहार करकिना सिम्पटम्स गुड़ाक कंट्रोल रे करी तापर प्रश्न थिला कि डेलीवरी परे कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होची 5 मास प्राय हे गलानी सेटा नॉर्मल की तो डेलीवरी परे प्राय टिपिकली कहा जाए कि 40-50 दिन पर्यंत ब्लीडिंग हवाटा बहुत नॉर्मल सेटा ब्लीडिंग नुहे सेटा वेरियस फॉर्म्स ऑफ यूट्राइन डिस्चार्ज इनिशियल किछि दिन पर्यंत सेटा ब्लड स्टेन रे जाए तापरे धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाए तापरे ब्राउनिश हो जाए तापरे आहरी ब्लड स्टेन सीरियस डिस्चार्ज भलिया हो जाए आउ तापरे स्लोली सेटा पुणी व्हाइटिश डिस्चार्ज को कन्वर्ट हो जाए
सेटा एकदम नॉर्मल प्रोसेस डेलीवरी पर सो 40-50 दिन पर्यंत जदि किसी डिस्चार्ज होची सेटा को नॉर्मल धरवा उचित अत्यधिक ब्लीडिंग जदि ना किंतु ताठू अधिका जदि ब्लीडिंग चले ताहले निश्चित डॉक्टर को देखा करिकी से अनुसार एडवाइस आप नवा उचित। सेकेंड थिला विद इन व्हाट एज वी कैन प्लान फॉर सेकेंड चाइल्ड। तो ये भी मुझे कहूँ चाहिए कि आम देश इन इंडिया वी हैव अ वन चाइल्ड नॉर्म which says that the government also proposes a one child norm। सबू आड़े आप एडवर्टाइजमेंट देखिए हम दो हमारा एक तो आम कंट्री रे वन चाइल्ड नॉर्म अच्छी तेणु आम समस्त को एडवाइस देवु कपल्स मान को कि गोटे चाइल्ड पर एम रखु किंतु तथापि जदि आपण मैंने चाहती किए जन चाहे सेकेंड चाइल्ड ताले आइडियल गैप हूँ 3 to 5 years जिते प्रथम छुआटा स्कूल गला भाया अवस्था हो जाए ब्रेस्ट फीडिंगटा छाड़ी दिए 2 वर्ष पर तापरे ट्राई करवाटा ठीक हम। तापर प्रश्न अगेन नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी बट रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी विच इज आस्किंग विच इज द बेस्ट ट्रीटमेंट IUI जोटा हूँ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की IVF। नाउ देर इज नो बेस्ट ट्रीटमेंट। एवरी ट्रीटमेंट हैज़ टू बी टेलर्ड for the patient or the couple concerned। So you have to ask your doctor who is a fertility specialist and they will be able to advise you as to which is suitable for you। तापर प्रश्नटा हूँ 180/120 ब्लड प्रेशर इन 9 months of pregnancy। यहाँ तो बहुत ही सीरियस कंडीशन। जदि गोटे प्रेग्नेंट स्त्री लोकर ब्लड प्रेशर 180/120 अच्छी ताहले सेटा बहुत ही सीरियस बोली कंसीडर करिया पड़िबो। आउ ताकू इमीडिएटली एडमिशन प्रोबेबली ICU एडमिशन आउ फर्दर टेस्ट गुड़ाक करिकी से अनुसार डॉक्टर मैंने डिसाइड करेंगे। 99% केसेस रे इमीडिएट डिलीवरी करने डॉक्टर मैंने एडवाइस देवे। तापर प्रश्न थिला सी सेक्शन डिलीवरी रे केते पर्यंत आपण हेवी वर्क करि परिबेनी। आई थिंक दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज दैट सिजेरियन करे हाउ मेनी डेज ऑफ रेस्ट शुड बी देयर। सो नॉर्मली द एडवाइस इज दैट आफ्टर सिजेरियन सेक्शन 6 सप्ताह और 1.5 months पर्यंत रेस्ट रहा उचित। जो समय आप मिनिमम निजर काम करेंगे छुआर काम करेंगे किंतु कौन सी भारी काम जमती ओलेवा पोछा लुगा काचिबा तल उपर उठा भारी जिनस टेकिबा बहुत गुड़ाए स्टेयर्स चढ़ा एगुड़ाक सबको अवॉइड करवा उचित। इज इट नॉर्मल टू हैव ब्रेस्ट लीकेज इन 7th month of pregnancy? Yes, it is very common to have some kind of discharge in pregnancy also from the breast। It is not uncommon, but usually it is not like milk. It is usually a serous discharge, so it is not uncommon, but excessive discharges also does not usually happen। Next question is baby movement is sometimes less, sometimes more in a day at 35 weeks of pregnancy. Is it normal? So again, in pregnancy, the child or the fetus inside the uterus undergoes cycles of sleep and wakefulness, just like adults or just like छुआ immediate जन्म होला परे बहुत समय सुए बहुत कम समय चाहे ए रकम साइकिल पेट भितर मध्य होता है। So it is very much normal that the baby will be more active at certain times and will be not very active in certain times of the day. It is very much expected। So I think I have answered whatever questions were there already, and now one more question has come up। I think it is also not related to pregnancy. This event today is related to pregnancy and its complications and questions related to pregnancy। But this question is मेरा weight continue बढ़ रहा है and the patient has PCOS। So what is the solution? There is no easy solution for weight gain।
PCOS पेशेंट लोगों का थोड़ा वेट गेन करने का टेंडेंसी रहता है, लेकिन अगर वो कोशिश करें तो बिल्कुल वेट को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं. क्वेश्चन इज़ कि उनको अपना एक्टिविटी लेवल, एक्सरसाइज लेवल और डाइट को बैलेंस करना पड़ता है. एवरीथिंग इज़ अबाउट बैलेंस. अगर बैलेंस कर पाए तो अपना वेट बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं. और कई बार जब वेट कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जो कि बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं है, बहुत औरतों को जिनको PCOS है उनको वेट कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी होता है. उन लोगों को प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहिए. वेट लॉस काउंसलर्स होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, कई दूसरे तरीके के कंसल्टेंट्स और स्पेशलिस्ट होते हैं जो बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं आपको वेट लॉस करने में. थैंक यू सो मच. Then one more question has come up, which says if the first baby is by cesarean, then second baby by normal, is it possible or not? It is certainly possible. It is called vaginal birth after cesarean section. But सबसे important question or rather most important question या हबो जे प्रथम cesarean टा कौन पाई करा हितला. जदि गोटे एमतिया कारण पाई हितला जोटा recurrent cause, माने धर पेल्विसटा टाइट अच्छी, रास्ताटा टाइट अच्छी, किंबा बहुत समय पेन आसिकी मध्य छुआटा डेलीवरी हो पारानी प्रथम थर ताकू लेबर डिस्ट्रोसिया कहती. यही सब कारण जदि अच्छी ताहले द्वितीयटा मध्य नॉर्मल डेलीवरी पाई चेष्टा करबा उचित नहीं, कारण एगुड़ा तो फिक्स्ड कॉजेस, एगुड़ा सेकेंड प्रेगनेंसी रे भी रिपीट हबार संभावना अच्छी. किंतु जदि एमती टाइप कॉज अच्छी जमती कि ब्लीडिंग फॉर APH, प्लासेंटा प्रीविया कि एमती गोटे किसी फुल रिलेटेड छुआर फुल कि प्लासेंटा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन अच्छी जो थे कि बहुत ब्लीडिंग हो गला किंबा ए टाइप फिटल डिस्ट्रेस है जोटा आपनकर सेकेंड प्रेगनेंसी रे न थई पारे, ताहले डेफिनेटली वजाइनल बर्थ पाई अटेम्प्ट करि हबो. किंतु कितुरा कॉम्प्लिकेशंस फेस करिवार संभावना अच्छी. से सदाबले आम एडवाइस करूँ कि जिते आपंकर सेकेंड प्रेगनेंसी रही आपंकर कंसल्टेंट कि आपंकर डॉक्टर के सहित डिस्कस करिकिना ही प्लान करूँ कौन करने चाहिए. आई थिंक वी हैव अबाउट 5-6 minutes more. If any more questions come up, I can try and answer those. So I think I just have another question which says I have done GCT at 2 hours. The result is 200. I am 3 months pregnant. Any issue regarding the one second, I cannot see the full question. So any issue regarding this? Yes, certainly. If the GCT is 200 at the end of 2 hours, then it has to be evaluated by your specialist, your gynecologist, and they might refer you to an endocrinologist or to a medical specialist. In all probability, it will be followed by a regular fasting blood sugar, postprandial, that means a blood sugar 2 hours after a normal diet, and HbA1c, which gives you idea about long-term control of blood sugar. And then the doctor will take a call as to how this has to be treated. This is called gestation. This can be labeled as gestational diabetes mellitus. So pregnancy has a lot of issues that patients face, and in our Instagram page we have lot of videos. You all could go back. Even in the Facebook, we have lot of videos covering lot of aspects of everyday questions that women have regarding their pregnancy. Okay, so I have another question which is, at 21 weeks of pregnancy I am suffering from cough and cold continuously. Is it normal? So if the cough and cold is related to an allergic rhinitis, and if you are prone to having allergies or allergic rhinitis, cold, sneezing and all that from the very beginning, then I would say it is very much expected to get like that again in pregnancy. Otherwise, anything more serious, or if any cough and cold is associated with fever,
which is recorded in the thermometer and shows a recording of at least 100 or 101, then you need to consult a medicine specialist after informing your gynecologist. And some medications can of course be given for a regular cold, like cetirizine. Usually we will advise a gargling, inhalation. Inhalation is a very good way to control chronic cold. Another question comes up: how long do I need to wait for trying for pregnancy after miscarriage? Is it safe to try with 76 kgs weight? So after miscarriage, it is very traditional for people to think that we should wait for about 3 to 6 months. But that is not scientifically accurate. Scientifically, there is no reason to wait at all after one miscarriage for another pregnancy. And as you said, is it safe to try with 76 kgs? There is nothing called safe or unsafe weight. Weight is always about BMI or body fat index. That is more important. And where the fat is located. So if somebody is 76 kgs, we can base our advice based on BMI. What is the BMI of the patient? If the BMI is very high, more than 27, more than 30, then it does carry with it some risks. And I guess everybody is aware that weight as such is a chronic disease and it has to be dealt like a chronic disease. And accordingly, as much as possible, it should be controlled. But then with weight also, many people can have a normal pregnancy and a normal life. So I am addicted to coffee. Should I leave before trying for pregnancy? So yes. Now addicted to coffee means what? Coffee and tea, caffeine as such is not a very good ingredient to have regularly because it is stimulating the central nervous system. But having said that, within moderation, if somebody has, let's say, a cup, 1 cup, 2 cups of coffee in a day, it may not be that bad. But between coffee and tea would be a better choice. So if somebody is addicted to coffee, I would certainly advise that try to reduce your caffeine intake to a moderate to minimal level before trying pregnancy. So I think we are at the end of our time, and thank you very much for those who logged in and asked their questions. I hope I was able to satisfy most of the questions that were asked, and I look forward to having more such events in the future. Thank you very much. Take care.